અંબાજી મંદિર અને દાંતા દરબાર વચ્ચેના વિવાદમાં હાઈકોર્ટના ચુકાદા બાદ દાંતાના મહારાજ રિદ્ધિરાજસિંહે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી છે। તેમણે જણાવ્યું છે કે માત્ર દરબારને નહીં પણ તમામ ભક્તોની આસ્થાનો વિષય છે અને કોર્ટ આ નિર્ણય રિવોક કરવો જોઈએ। તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે કે હાઈકોર્ટ સરદાર પટેલ અને રાજાઓ વચ્ચે થયેલી ઐતિહાસિક સંધિ અને વચનોનો ભંગ કર્યો છે। મહત્વનું છે કે રિદ્ધિરાજસિંહે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહને હસ્તક્ષેપ કરવા માટે વિનંતી કરી હતી। તેમણે કહ્યું છે કે અગાઉ અમે મુગલો સામે લડ્યા હતા અને હવે આસ્થા માટે કોર્ટ સામે શાંતિપૂર્વક લડીશું। આ મામલે હવે આસ્થા અને કાયદાકીય જંગ તેજ બન્યો છે। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सनातन धर्म के ऊपर सबसे बड़ा एक आघात है, क्योंकि ये सनातन धर्म ये परंपरा है। एक करवटा जो बोलते हैं उसको एक करवटा है, और ये सनातन धर्म के ऊपर आघात है कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि ये 1000 सालों से पूजा होती आ रही है। आज की पूजा नहीं है ये। मैं 40वीं मेरी पीढ़ी में मैं 40वां हूं ये पूजा कर रहा हूं, और हाँ कोर्ट का चुकाया था तब उसके सामने आगे अपील में जाएंगे। क्यों आज की तारीख में सरकार 552 स्टेट का म्यूजियम बना रही है? क्यों हमारे को अपने सरदार पटेल जी ने जब हमको जो वादे किए थे उसके हिसाब से चल रहे? ये तो वादा तोड़ना हुआ सरदार पटेल के हिसाब से। सरकार से मेरा निवेदन है, मोदी साहब से मेरा निवेदन है, अमित शाह भाई से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है, हर्ष संघवी साहब से मेरा निवेदन है, जो अभी लीडिंग सरकार में है। सबके सामने मेरा ये निवेदन है कि आप इसको आराम से लीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि हम इसका आंदोलन करें या कुछ करें, पर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका करेंगे।